Hello guys, welcome to our channel CBSE Concepts, and I am here to present you a lecture on chemical reaction and equation of class 10. So, chemical reaction and equation. All the situations will be arise from the one point. What is chemical changes? केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? केमिकल चेंजेस, अगर हमें ये पता चल गया कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं तो हम सब कुछ समझ सकते हैं बहुत आसानी से. तो chemical changes are those permanent changes in which new chemical substances are formed with new chemical properties, and these are called chemical changes. तो हमने क्या पॉइंट लिए? परमानेंट चेंज. Okay, I'm not talking about the reversible reactions. I'm taking the ideal situation. Okay, permanent changes and new substance will be formed. Okay, so what are the things we will discussing about in this chapter are, let me explain you chemical reactions. About chemical reactions, there are many types of chemical reactions like combination reaction, in which two compounds are formed by the combine. Okay, and decomposition reaction. Number 3, displacement reaction. Displacement reaction is a reaction in which one ion get exchanged due to a activity series. Okay, and double displacement reaction is also known as the precipitation reaction, in which the insoluble products has been formed. That is known as precipitate. Double displacement, in which two ions get exchanged with each metals. And at last, the neutralization reaction and redox reaction. Okay, so let's start from the chemical equation. Chemical equations क्या होते हैं, ये थोड़ा अलग है. सबसे पहले हमें केमिकल रिएक्शंस को जानने से पहले हमें केमिकल इक्वेशंस को जानना ज़रूरी है. तब हम, क्योंकि वैसे हमें पता है कि क्या रिएक्शंस होते हैं, लेकिन उनको पेपर में कैसे लिखें, किसी थ्योरेटिकल फॉर्म में कैसे लिखा जाए, वो ये बताएगा कि केमिकल इक्वेशंस की फॉर्म में हम क्या यूज़ कर सकते हैं. रिप्रेजेंटेशन क्या है, वो रिप्रेजेंट करें. रिप्रेजेंटेशन बाय यूजिंग सिंबल्स, signs, etc. Okay, so let's start. Let me take one example. How it looks if I write magnesium plus oxygen gives magnesium oxide. Don't you think that it's too lengthy? So how it can be reduced and can be easily written? That is given by the chemical equation by using some representation and some signs. Okay, so how can we replace this? Simply Mg plus O2 gives 2 MgO.
Okay, that's why we use chemical equations. So what is the use of chemical reaction? What's the chemical reaction? It is the chemical reaction. It is the process by which one or more substance transform into new substances. It means A can be converted into B, but B is the new substance. Although it's mixed from this composition, but it doesn't determine its chemical composition even. And you can also say that it is the process in which the old bonds break and new bonds are formed. Simple. Okay. So what are the type of bonds? Type of bonds may be covalent bonds and ionic bonds. Okay. So why do substances take part in chemical reaction? It's a very big question. Why do substances take part in chemical reaction? Why do substances take part in chemical reaction? Because to gain maximum stability, because there are some metals and compounds which are not stable form, so to make it stable they form compounds with the other metals or other substances. Okay, and to acquire the minimum energy state, Why minimum energy state? Because if they are not in the minimum energy state, they can be further react with any other reactions. Okay, so it's very important for them to acquire minimum energy state so that they will become stable. So moving further, we should know about some very basic points. What are reactants? Reactants क्या होते हैं? सिंपल भाषा में कहूँ तो reactants वो substances होते हैं जो chemical reaction में take part लेते हैं. Simple, take part. और products क्या होंगे? Products जो कि हमें form होते हैं. Simple. Example, N2 plus 3H2 gives 2NH3. Okay. Simple. H2 plus Cl2 gives HCl. Simple. This is the simplest way. Okay. So how can we determine that the chemical changes? Determination कैसे पता लगेगा कि हमें chemical changes हो चुकी है? Chemical changes देखने से लग सकता है पता, but maybe possible chances नहीं है कि नहीं पता लगे. तो क्या वो तरीके? Color change, temperature, change in temperature. Actually these are changes. Formation of gases can be formed. Formation of gases. Example, if we burn the lead nitrates, it form the potassium nitrate and lead iodide. Okay. Change in odor means simply smell. ADOUR, odor. Physical state में their physical state में change, physical state में भी change आ सकता है. And at last हमारा precipitation जो होगा, precipitate का मतलब होता है
प्रेसिपिटेट। ठीक है, प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है? प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट होता है इनसॉल्युबल प्रोडक्ट्स, सिंपली इनसॉल्युबल प्रोडक्ट्स होता है हमारा। ओके, now let's move ahead and let us try to understand what are the ways how we can balance the chemical equation. केमिकल इक्वेशन भी तो बैलेंस करना आना चाहिए हमें को। तो मेनली बैलेंस करने के लिए केमिकल इक्वेशन को सबसे बेसिक पॉइंट आता है हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड। Let me take very basic example. H2 plus Cl2 gives HCl. If you notice that the hydrogen atom is of two atoms, मतलब कोई दो कंपोजिशंस हैं हाइड्रोजन में, और क्लोरीन में भी दो कंपोजिशंस हैं। तो अब हमें पता लग गया कि हमें जो प्रोडक्ट साइड है, बेसिक तो यही फंडा है कि जो प्रोडक्ट साइड है वो रिएक्टेंट के बराबर होना चाहिए। ओके, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा सबसे बेसिक फंडा है। तो इसमें क्या होगा, अब हमने देखा कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, टोटल 4 हो गए, यहाँ पे भी 2 लगा देते हैं, सिंपल। ओके, और एक होता है हमारा पार्शियल इक्वेशन मेथड बहुत इजी है। मतलब इसमें क्या होता है, पार्शियल इक्वेशन मेथड okay, what are the things we will use in the partial equation method is, हम सबको अलग अलग कर देते हैं। जैसे NH3 plus O2 gives N2 plus H2O। ओके, तो अब हम इसमें चेक करेंगे कि कैसे हमें पता लगे। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स N के कितने हैं। N के नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड में कितने हैं? 1। हाइड्रोजन के कितने हैं? 3। ऑक्सीजन के कितने हैं? 2। और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं? नाइट्रोजन के 2, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 1। ओके, ऑक्सीजन के 1 है। तो अब हम क्या करेंगे, जो ऑक्सीजन के 1 थे, मैं एक बार फिर से यहाँ लिख देता हूँ, NHO 1 3 2 and 2 2 1। ओके, हमें इसको रेफरेंस रखना है। और अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 2NH3 हमें इनिशियली गिवन था, 2NH3 plus O2 gives N2 plus 3H2। प्लीज़ गाइस, हमें बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने देखा कि कहाँ मेनली कमी आ रही है। ओके, हमने सबसे पहले ये देखा था, यहाँ पे पहले 2 नहीं था, यहाँ पे पहले 2 नहीं था। मैंने देखा कि यहाँ पे N है, उसमें कमी आ रही है, तो मैं इसमें
टू क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ इस तरफ. देन आई विल सी दैट ये H के नंबर ऑफ एटम्स कितने हो चुके हैं, 6. फाइन. ऑक्सीजन कम है, मतलब ऑक्सीजन में दिक्कत है, तो हमें यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ बढ़ाना पड़ेगा. चलो लो बढ़ा दिया, 2 × 6 हो गया ये. और यहाँ पे बढ़ाएंगे क्योंकि अब यहाँ बढ़ चुका है. अब हाइड्रोजन हो चुके हैं हमारे 6, 12, तो यहाँ पे भी हमें करना पड़ेगा. ओके, तो यहाँ पे बढ़ाया 2 × 2 NH3 प्लस O2 का एज इट इज रहेगा, O2 का एज इट इज रहेगा. मे भी यहाँ पे हमने चेंज किया है, तो हमें यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा. तो ये है, तो हाइड्रोजन में भी चेंज करना पड़ेगा. 3O2 गिव्स 2N2 प्लस 6H2O. गाइस ये होगा हमारा आंसर. आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा. मतलब जहाँ पे भी सबसे पहले हमें ये देखना है, बेसिक फंडा ये है कि जहाँ पे भी सबसे पहले कमी आ रही है, सबसे पहले उसको फिल करो. फिर उसके बाद देखो कि वैलेंसी कितनी है जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली, सिंपल. जैसे एक और लेते हैं हम लोग, H2S हमें गिवन है, हमें गिवन था H2S प्लस SO2 गिव H2O प्लस S. अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे हाइड्रोजन के तो 2 हैं, दूसरी तरफ भी 2 हैं, ऑक्सीजन के 2 हैं, लेकिन दूसरी तरफ 1 है, तो कमी आ रही है वहाँ. तो सबसे पहले मैं यहीं बढ़ा देता हूँ, ये लो 2 बढ़ गए. ठीक है, अब इसको ज़्यादा चाहिए होंगे क्योंकि इसको, ये लो इसके ही बढ़ गए. ठीक है, हो गया. अब देखो यहाँ पे S, यहाँ पे 3, 1 2 3 S हो गए. सिंपल है, यहाँ पे ही बढ़ा दिया 3, तो ये होगा. तो एक सिंपल सा हमने फंडा देखा, लैकिंग जहाँ पे होती है ना, वहाँ पे हम अपना बैलेंस इक्वेशन फॉर्म कराते हैं. लैकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आगे बढ़ेंगे. ओके, तो ये थी हमारी. अब हम बात एक और टाइप की, ये तो होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन. जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसको क्या बोलते हैं, अनबैलेंस को क्या बोलते हैं, स्केलेटल इक्वेशन. स्केलेटल इसलिए क्योंकि जैसे मसल्स के बिना स्केलेटन का कोई रोल नहीं है, ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स ना लगाने के बाद जो इक्वेशन इनिशियली थी उसका भी कोई रोल नहीं है. तो मतलब ये रिलेशन है. ऐसा हमें इसमें कोई डीप जाने की जरूरत नहीं है. लेट मी चेंज द पेज. ओके, सो totally starts from, हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. टाइप्स ये जनरली आता है. एनर्जी चेंज के बेसिस पे हम लोग 2 टाइप के होते हैं हीट के फॉर्म में, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक. हम इसको पैरेलली करेंगे. एंडोथर्मिक, जैसे कि हमें पता चल रहा है, एक्सोथर्मिक, एक्सो का मतलब ही होता है आउट, थर्मिक का मतलब होता है हीट, एंडो का मतलब होता है इन, थर्मिक वाई सेम हीट. तो इसका क्या मतलब है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच द हीट इज रिलीज्ड आउट, and exothermic reactions are those reactions in which the heat is absorbed. Vast difference. Okay, अब
एग्जाम्पल लेते हैं, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत बहुत नॉर्मल है, हम खुद ही समझ जाएंगे ये तो। मैग्नीशियम जलाते हैं, मैग्नीशियम O2 हमारा बनता है 2MgO विद अ डैजलिंग वाइट फ्लेम। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, डैजलिंग वाइट फ्लेम। डैजलिंग वाइट फ्लेम वर्ड से हमें पता चल गया कि कुछ ना कुछ रिलीज हो रहा है। रिलीज क्या होगा? बेसिकली हीट, लाइट और साउंड, बट हम लेंगे इसमें हीट। रिलीज तो हो गया ना, एंडो एक्सोथर्मिक में तो आ गया, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा एक्सोथर्मिक का। एक और होता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन भी है। वाई रेस्पिरेशन? क्योंकि हम ग्लूकोज लेते हैं विद ऑक्सीजन भी लेते हैं, बट हम रिलीज क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ 38 ATP। ओके, मैं इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है इसमें। और एक और थोड़ा फेमस एग्जांपल है, वो है, ये मैं एक्सोथर्मिक का ही बता रहा हूँ, CaO। ये बहुत हर जगह यूज होगा लगभग। CaO क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। इसका दूसरा नाम क्या है? इसको क्विक लाइम भी बोलते हैं, क्विक लाइम। ओके, अभी क्या बनाएगा? CaOH होल ट्वाइस। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्लेक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इस दोनों प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्लेकिंग ऑफ लाइम। ओके, नाउ एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में देखते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच द हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट और इनिशिएट द रिएक्शंस। Example, these can be in the form of heat, light and electricity. Okay, suppose example लेते हैं हम लोग N2 plus O2. N2 plus O2, it requires an energy delta. डेल्टा क्या होता है? हीट। जब हम हीट देते हैं तो हम डेल्टा लगाते हैं। 2NO, इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड। ओके गाइस, and the very famous example that is opposite of exothermic reaction that we have done earlier, CaCO3, इसको बोलते हैं हम लाइमस्टोन। लाइमस्टोन। अब एक बेसिक, अगर जब भी CO3 होगा तो CO2 तो रिलीज होना पक्का है, कोई मतलब कोई वो ही नहीं है, संदेह ही नहीं है कि रिलीज नहीं होगा, रिलीज होगा ही। ओके, CaO यही वही अपना क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनाएगा। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए हमें। तो ये हो गया हमारा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट। अब बात आती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन। नेचर के बेसिस पे रिएक्शन के कितने टाइप हैं, या नॉर्मल टाइप ही कह देते हैं क्योंकि यही मेन होते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं हम सबसे पहले। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइनेशन से ही ये वर्ड आया है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच two or more compounds form to make a new compound. Suppose this is A and B that forms a C. Okay, ये होते हैं हमारे combination reactions. Example बहुत है इसका एग्जाम्पल। C plus O2 gives CO2 plus heat आ गया, प्लस हीट। तो इसका मतलब ये क्या है? हीट यहाँ प्रोडक्ट साइड में फॉर्म हो रही है, इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके,
और एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं, एक एग्जाम्पल है N2 plus 3H2. N2 plus 3H2 gives 2NH3. Okay, with the molybdenum and Fe as a catalyst and molybdenum as a promoter. Okay, तो इसका दूसरा नाम भी है, इसको हम बोलते हैं हेबर्स प्रोसेस. हेबर्स प्रोसेस which helps in the formation of ammonia. कई बच्चों को इस बात में कंफ्यूजन होती होगी कि अमोनिया NH3 है या अमोनियम NH3 है. इसको सिंपल सी बात है, अमोनिया जो होता है अमोनिया और ये होता है अमोनियम जो कि कंप्लीट है. अमोनियम में ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स होते हैं और इसमें भी ज़्यादा ही हाइड्रोजन होंगे. इस तरीके से आप याद कर सकते हैं. ओके, अब मैं आपसे बात करूंगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन. डीकम्पोजिशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस होती हैं? Decomposition reactions are those reactions. Decomposition reaction. Okay, decompose होना. हमने ऐसा कुछ बैक्टीरिया जैसा कुछ पढ़ा था, डिकम्पोज हो रहा है मतलब ब्रेक हो रहा है. हमें यहाँ पे वर्ड हमने कीप ऑन लिया है ना, ब्रेक हो रहा है. कोई सब्सटेंस है वो ब्रेक होके 2 और मोर पार्ट्स में ब्रेक होता है. अब इसमें आते 3 टाइप्स. कौन कौन से? एक थर्मल, हीट देके हम भी ब्रेक कर सकते हैं. एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रिसिटी, एंड फोटोकेमिकल मीन्स सनलाइट. ओके, तो हम इनको, तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूँ. डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स इनटू स्मॉलर और सिंपलर सब्सटेंस. वैसे बताऊँ तो यहाँ पे ए था, ए और बी थे, ब्रेक हो गए ए में प्लस बी में. सिंपल. ओके, इसको फोटोलिसिस भी बोलते हैं, फोटोलिसिस, और इसको इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं. आई मेक श्योर दैट इट डजंट लेफ्ट विद द सिंगल टॉपिक. इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं. ओके गाइस, अब हम आते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन पे. थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है? थर्मल decomposition reactions are those reaction in which decomposition is take place with the help of heat. वही नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं हम लोग, CaCO3. इसका क्वेश्चन आता है कई बार कि एक्सप्लेन करो तीनों टाइप के डिकम्पोजिशंस को. मेनली इसमें रिएक्शंस लिखने को ही आता है. ओके, नाउ इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है? इलेक्ट्रोलिटिक decompositions are those reactions or those decomposition reactions which are carried out by electric current guys.
इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक करंट। करंट करंट में कैसे यार, मतलब करंट कैसे हो सकता है? करंट ऐसे कि करंट का काम क्या है? चार्ज को ब्रेक करना। और चार्ज किस में होते हैं? कंपाउंड्स में तो होते हैं चार्ज। उनको ब्रेक कर दिया, उनको अलग कर दिया, तो अब दोनों अपने अपने रास्ते चल देंगे, मतलब दोनों आपस में ब्रेक हो गए। तो इस तरीके से हम रिलेशन है करंट का। तो इसमें एक बात है कि जो करंट है अगर उसको कंडक्ट कराना है तो प्योर वाटर नहीं चलेगा, प्योर वाटर या डिस्टिल्ड वाटर भी नहीं चलेगा, कुछ अमाउंट में सॉल्ट प्रेजेंट होना चाहिए, कुछ अमाउंट में सॉल्ट। मेनली हम जो सॉल्ट लेते हैं वो होता है CuSO4। ओके, तो अब एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग इसका। जैसे कि एग्जांपल लिया हमने NaCl है, 2 NaCl था, मोल्टन स्टेट में। विदाउट मोल्टन स्टेट तो, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट तो फिर लिक्विड में फ्लो करेगा ना, ऑल्दो कंडक्टर में भी फ्लो कर सकता है, बट इस केस में नहीं करेगा। NaCl होगा तो क्या होगा यहाँ पे 2Na प्लस Cl, सिंपल Cl2। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये थोड़ा सा अलग है, इसको क्लोर अल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं। क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्लोर अल्कली प्रोसेस। Make sure that you are aware about this process. It's very important. That is helps in the formation of sodium hydrogen carbonate. Okay, 2NaCl plus 2H2O gives, with the help of electric current 2NaOH plus H2 plus Cl2. This is the reaction. Now photolytic decomposition. Photolytic decompositions are those decompositions in which the light is absorbed to carry out the decomposition reaction. In which light is absorbed. Light, main concept है light. Okay, एग्जाम्पल, हम कभी जाते हैं फोटोग्राफर्स के पास, तो जब भी वो पहली फोटो क्लिक करते हैं उसकी बनती है नेगेटिव। अब जो नेगेटिव है उस नेगेटिव, वो जो नेगेटिव होता है उसको एक सोल्यूशन में डालते हैं। वो सोल्यूशन है सोडियम थायोसल्फेट। वो उस लेटेंट इमेज, मतलब वो जो इमेज है, नेगेटिव इमेज है, उसको परमानेंट इमेज में चेंज कर देता है। खैर हमें ये जानने की इतना ज़रूरत नहीं है, बट मैं तुम्हें एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ। तो मतलब मेन इसका यूज़ है फोटोग्राफिक हेल्प्स इन द फोटोग्राफी। रिएक्शन भी फिर उसी का लेंगे। 2AgBr gives, in the presence of sunlight, I'm not writing here, 2Ag plus Br. अब एक क्वेश्चन आता है इसमें कि when AgBr react in the presence of sunlight, why it turns gray? Why gray? Because it forms a silver, and silver is of gray color.
Okay. And make sure guys, the quality of the photo which we have taken from this reaction is depend upon the type of light. Okay. Now before moving further, we have discussed what we have discussed: chemical reactions, chemical equations, why chemical reactions has been taking place, what are the things by which we know that the chemical reaction has been occurred, and the types of chemical reaction on the basis of heat change: exothermic, endothermic. Exothermic is of in which the heat is released, endothermic is of in which the heat is absorbed. And the another type of reaction is combination reaction and decomposition reaction. Decomposition reaction is further divided into three types: photolytic decomposition, electrolytic decomposition, and finally thermal decomposition reaction, which we have discussed earlier. Okay, now move forward. Before moving with this topic, I need to introduce some new concept of which we know, that is activity series. Activity series. Okay, activity series, it is a series of metal in which they are arranged in order of decreasing reactivity from top to bottom. As we go down, reactivity decreases. Name are K, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, hydrogen. I'm writing here. That also be considered in the decreasing reactivity order. Copper, Hg, that is mercury. Silver, that is Ag, augmentum. Platinum, Pt. Gold, Ag, Au, Au. Okay, this is the reactivity series. It means the potassium is the most reactive. And gold and platinum, you can consider, is least reactive, and taken also silver is the least reactive type of elements. Okay, let us move forward. When we learn this reaction, it will be very easy to understand the displacement reaction. Displacement reactions is a type of reaction in which more reactive metal displaces a less reactive metal. Why we need to introduce this concept? Because now we have to displace the least reactive metal with the more reactive metal. Okay, let us suppose take an example. If you want to click and take the screenshot, you can take. Open. And now starts displacement reactions. High reactive क्या करेगा?
डिस्प्लेस कर देगा. हाई रिएक्टिव डिस्प्लेसेस लो रिएक्टिव मेटल. Displaces low reactive metal. Low reactive metal. This is the basic concept. And this is also the field where the most of the questions coming in the chemical reaction and equation chapter. Suppose let's take an example. Zn plus FeSO4. Zn plus FeSO4 gives ZnSO4 plus Fe. ZnSO4 plus Fe. Now if we take an example and we are aware that Zn is more reactive than Fe, so it will displaces its position and come in with the bond and form the bond with the sulfate group and become colorless. It's of pale green, okay, pale green. Fe dark gray color. We don't confuse with the ferric oxide. It's of reddish brown. It's of zinc. Okay, let's move forward. Next example is Cu. It's very famous example. Cu plus AgNO3 gives CuNO3 whole twice plus twice of Ag. Ag silver nitrate. It's of colorless. We need to learn that. Colorless. And CuNO3 is of copper nitrate, that is blue. And copper sulfate, CuSO4, it's of also the blue color, bluish. So that's all about the displacement reaction. Now the application of displacement reaction, one very famous application of thermite welding, thermite reaction, that is thermite reaction. It will come in the exam. It is the reaction in which the aluminium powder means aluminium, and ferric oxide powder are heated by burning, and when the reaction starts, the aluminium metal displaces the iron metal from the ferric oxide. Simple. So Fe2O3, it's of ferric oxide plus 2 aluminium, and we have given the heat Al2O3 plus 2Fe. Please guys, it's Fe. Okay, Fe2O3, it displaces that part and take the position instead of Fe and form a thermite reaction. This reaction will occur only at the 3000 degrees Celsius. We don't need to learn that. We just need to learn that this reaction Fe2O3 plus Al, by giving the heat, it forms a Al2O3, that is aluminium oxide, and it remains with the iron in the form of molten and give us the large amount of heat. Okay, now let's move forward. Now let's take an example. Some non-metal displaces another non-metal. So one example only. Cl2 plus 2 kBr
displaces 2KCl plus Br2. Okay. Now the double displacement reaction. Double displacement reaction is also known as the precipitation reaction, because in which the insoluble product is formed. Double displacement. Okay. Double displacement reactions. The chemical reaction in which exchange of ions means normally the elements, take place when the aqueous solution of two ionic compounds are mixed together. Simply explained by example. Exchange of both the ions. Simple. Exchange of both ions. Example: AgNO3 plus NaCl gives AgCl plus NaNO3. It's sodium nitrate, and silver chloride, it's of white precipitate. Okay, white precipitate. FeSO4 is also the precipitate, guys. Okay, so this is our example, and simple concept of this. And when the question comes and we have given with the two compound, just interchange the ions of that compound, simply changing the metals. No need to do anything else. Okay. Now neutralization reaction. What's the meaning of word neutralize? Neutralize means to balance. Means balance by either cancelling. It also touches the concept of pH value, that is potent of hydrogen, that we will study in chapter 2 maybe. Acid plus base, simple concept is of acid plus base gives salt plus water plus heat. Let us take an example. NaOH, very famous example. NaOH. 1 minute. NaOH. HCl plus NaOH gives NaCl, that is common salt, table salt, plus H2O. We need not to give the heat. And another reaction is HCl plus KOH gives KCl plus H2O. It means H2O releasing is compulsory. It's enough for that concept. Now let's move forward to redox reaction. If you break that word, red, it's considered the reduction. Ox, that is of oxidation. Okay, reduction means the addition of हाइड्रोजन ऐड होता है
एंड ऑक्सीजन रिमूव होता है, ऑक्सीजन रिमूव होता है। ओके, इसमें भी क्या होता है, हाइड्रोजन, इट्स जस्ट ऑफ ऑपोजिट, हाइड्रोजन रिमूव, oxygen and addition of oxygen is known as oxidation, addition of oxygen. But this is not only the case, guys, it's quite vast. Or you can say that the loss of electron is also known as oxidation, and addition of electron, yeah, or gain of electron, addition of electron or gain of electron. Okay, and the reaction in which the simultaneously redox reaction and oxidation reactions occur, those reactions are called redox reactions. Let us take an example. First, please keep all these points in your mind. Okay, guys, now let us take an example of redox reaction. Okay, guys, now let us take an example of redox reaction. I am taking an example of Mg plus O2, 2 Mg plus O2 gives 2 MgO with a white flame dazzling. First of all, before grabbing this concept, we need to know what is oxidizing agent and what is reducing agent. Oxidizing agent are those agents which oxidizing the substance by reducing itself. Oxidizes the substance by reducing others, by reducing itself. Another, reducing agents which reduces the substance by oxidizes itself, Now let's move forward to this example. You see that here this is Mg, and the addition of electron takes place. So here oxidation occurs in this process from 2Mg to 2MgO. Okay, but now you see that in oxygen itself there is loss of oxygen from 2 to 1. So it's also a reduction. And guys, please keep my words, the part that is of oxidation and the reactant starts from that part is reducing agent, and the reaction in which the reactant side take the reduction process is oxidizing agent. Okay, so here 2Mg is the reducing agent and O2 is the oxidizing agent. If anyone asks the oxidizing agent and reducing agent, always the answer should be from the product, not from the product side. It's always from the reactant side. Okay, what is the everyday uses of natural reduction? नेचुरल रिडक्शन का नॉर्मल लाइफ में क्या यूज़ है? हमें मतलब इतना, हम क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? कुछ तो खास बात होगी। तो इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं। पहली एप्लीकेशन है कोरोजन।
corrosion क्या होता है? Eating up of metals by the action of air and moisture. Eating up of metal by the action of air and moisture. The corrosion which take place in iron is known as rusting, and the corrosion which take place in copper is known as tarnishing. Okay, there is a difference. So let us take a reaction of rusting. This is the normal Fe, 4Fe plus 3O2 plus that passes through the water, H2O, gives 2Fe to O3 dot X H2O. This is the water of crystallization, X water of crystallization, because you don't know the proper content of moisture. This is the moist air. Okay, this is the moist air. Sometime you have noticed that the silver you brought earlier is of grey color, but after some time it loses its luster and form a black colored compound, that is AgS, silver sulfide. Okay, by the formation like H2S in the air, because H2S is present in water, and the reaction would be like this: Ag when react with H2S form AgS, Ag2S plus H2. Okay, this is the reaction by which the silver sulfide or black colored compound is formed. Now what are the ways by which we can prevent the rusting? Prevention. Okay, number one, oiling, greasing. These are the ways by which we can prevent. Electroplating is the commercial use. Electroplating by using the chromium and nickel. Electroplating. Chromium and nickel is used. Chromium and nickel is used. Okay, number 3, galvanization. It is also a different commercialization process. It's of these two processes of very great use in the industrial, and it's the coating the iron surface with a thin layer of zinc. Coating iron surface with thin layer of zinc. Another method is painting. Painting is the basic method. Actually, painting doesn't prevent the rusting, but it forms a layer so that the air and moisture cannot come directly to the element like iron, copper. Okay, and then we have another method, alloying actually shifting the rusting, shifting the corrosion part. It doesn't actually prevent the corrosion, but it shifts the position. So when we like iron is always alloyed with nickel or chromium to increase its life. There is a well-known fact that about tons of the iron is waste in the industrial due to its corrosion. And we know that the rusting is the very slow process. Alloying. Okay. Now let's move forward to the next topic,
that is rancidity. Rancidity. Have you ever noticed that you have left your food for a day and after some time it gives a foul smell? That is the first indication of rancid, that the foods become rancid. So what's its definition? It's definitely the natural oxidation of oils, the natural oxidation of fats that is present in the food, fats and oils present in the food, giving, what's the indication? Giving bad smell and taste. It can also cause food poisoning and taste. Okay. The rate of rancidity is increasing in the rainy season due to the presence of moisture. Okay. Now, what are the ways by which we can prevent the rancidity? There are many ways. By using prevention can be done by refrigeration. Keep your food in a fridge, because by the method of storing the food at low temperature and at a very dry places, it can increase the efficiency of food and doesn't allow it to become rancid. Keeping away from sunlight. Always keep your food away from the sunlight. It is basically talk about some particular foods. Drying is also some method. Drying is such method that is contradicting with the keeping away from the sunlight. Preservative. We can use preservatives like sodium benzoate. Sodium benzoate is the chemical compound which is used to preserve the food and acts as a preservative. Sodium benzoate. And antioxidant absorbs the oxygen from the food and keeps the food not to become rancid. Or antioxidants like BHA and BHT butylated hydroxy anisole, and it's the same butylated hydroxy toluene. Toluene is the aromatic benzene ring with attached one CH3 group and one OH group. Toluene. So BHA is butylated hydroxy anisole and BHT is butylated hydroxy toluene. So this is all about the chapter. Let me give a recap of what we have done in this chapter. Chemical reaction and equation. Chemical reactions are those reactions in which the new substances is formed due to the chemical changes. And chemical equations, why we need the chemical equations? Because we want to give the theoretical concept, so it requires a symbol and representations so that it becomes feasible for us to create the reactions. So we have talked about the balance reactions, skeletal equation, balance equation. Balance equations are those equations in which the number of moles of the product is equals to number of moles of the reactants, and
Another type we have discussed, the type of reactions for in the basis of two types of nature and heat of exothermic and endothermic. Endothermic reactions are those reactions in which the heat is released, in which the heat is absorbed, and exothermic reactions are those reactions in which the heat is released. Okay, and four types of reactions: combination reaction, decomposition reaction, double displacement reaction, and displacement reaction. Combination reactions are those reactions in which two or more substances form a single compound. Okay, and they form a combination by ionic bond or covalent bond. And the decomposition reactions in which the single compound breaks into two or more form of compounds. It is further divided into three parts: photolytic, electrolytic, and thermal. Photolytic, which related to the light; electrolytic, which related to the electricity; and photolytic helps in the photography; and electricity, which helps in the to break the NaCl ions in the molten state. And thermal decomposition in which the heat is applied to decompose the reaction. The redox reaction, displacement reaction is a type of reaction in which the more active metal displaces the lower active metal and form a bonds with the salt. For this we have to learn the activity series. And the another type is this is double displacement reaction. Double displacement reaction is a type of reaction in which the insoluble product is formed, and it is also called a precipitation reaction, and it is a very fast reaction. Please make sure. And in which the ions can be exchanged. Ions mean the same of metals. Metal can get exchanged simply. And the another type of reaction is the redox reaction, in which the reduction and oxidation take place simultaneously. Oxidation, it is the reaction in which the addition of oxygen, removal of hydrogen, and removal of electron take place. And the reduction is the process in which addition of hydrogen, removal of oxygen, and gain of electron take place. Okay, and at last there are some applications of redox reaction, and for this we have two concepts: reducing agent, oxidizing agent. Reducing agents are those which reduces the compound by oxidizes itself, and the oxidizing agent are those which oxidizes the compound by reducing itself. Okay, and the application of redox reaction is a corrosion and rusting. Corrosion is the heating up of metal by the action of water and moisture and air. We have the famous example: Fe plus 3O2 plus water gives hydrated iron oxide, that is also known as rusting of iron. And copper, it's a tarnishing, and the silver ornaments gets black colored compound due to the formation of silver sulfide. And if we react the aluminium metal with the oxygen, it's very important, please note, the aluminium metal reacts with oxygen to form the inert compound Al2O3, that is helps in the protection of corrosion. It totally works opposite. That's why there is no need to aluminium articles to kept in painting and polishing. So what are the ways by which we can prevent the rusting? Oiling and greasing. Surface of iron object is coated with oil, grease or paints. Electroplating is the process of plating of iron with the resistant metals such as chromium and nickel. Galvanization is the process of coating the iron surface
with a thin layer of zinc. And alloying is the mixing of two metals. Suppose the iron, mixing of two or more metal, iron is allowed with nickel or chromium. Rancidity is a quite different topic. Rancidity is the situation occurs when the natural oxidation of oil and fat which are present in food item giving smell bad and taste giving bad smell and taste. How we can prevent the rancidity? By refrigeration, using preservative like sodium benzoate, using antioxidant like butylated hydroxyanisole, that is BHA, and BHT, butylated hydroxy toluene, by using of the nitrogen gas. Somewhat we have seen that the Lay's package was full of, and we have also complained that it's only in a half packet and another half is completely fulfilled with the air, because it needs air is needed. Air is actually a nitrogen. Flushing of nitrogen is take place. Creation of vacuums. The sealed and airtight container are used so that they create the vacuum and doesn't allow the oxygen to oxidation of food and become rancid. Okay, that's all about. Please do like, share and subscribe this channel, and please press the bell notification, and thank you for this.